Children, today we are going to do our lesson number 4 from English Reader. In this lesson, we are going to read a story of the ant and the dove. बच्चों, आज हम एक चींटी और कबूतर की कहानी पढ़ेंगे. One day, an ant was busy looking for food on a river bank. Just then, a strong wind blew him into the river. Children, what happened that one day an ant was busy looking for his food. एक दिन एक चींटी नदी के किनारे खाना ढूंढने में व्यस्त थी. Just then a strong wind blew him into the river. Strong wind means तेज हवा. तेज हवा आई और उस चींटी को नदी में बहाकर ले गई. The ant struggled to save himself from drowning. The ant struggled. Struggled means tried very hard. कोशिश करना. The ant tried very hard to save himself from drowning. Drowning means sinking to the bottom of a water body. In Hindi, it means डूबना. The ant struggled to save himself from drowning. A dove sitting on a nearby tree heard him. जब तेज हवा से चींटी नदी के पानी में गिर गई तो वह अपने आप को डूबने से बचाने के लिए कोशिश करने लगी. तभी एक कबूतर जो पास ही पेड़ पर बैठा था उसने चींटी के चिल्लाने की आवाज सुनी. The dove quickly plucked off a leaf and dropped it into the river near the ant. The ant managed to crawl onto the leaf and reached the river bank safely. Bachcho, the dove quickly plucked off a leaf. Plucked off means to pull out. He pulled out a leaf and dropped it in the water near the ant. कबूतर ने क्या किया? पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और जल्दी से उसको नदी में पानी के अंदर चींटी के पास फेंक दिया. The ant managed to crawl onto the leaf. चींटी ने क्या किया? वो उस पत्ते के सहारे उसके ऊपर चढ़ गई और she used it just like a boat. And she reached the river bank safely. जो चींटी थी वह सुरक्षा पूर्वक नदी के किनारे पहुंचने में सफल हो गई. A few weeks later, the dove was resting on a tree. When a hunter saw her, the hunter hid behind a bush and aimed his gun at the dove. बच्चों, कुछ हफ्तों के बाद कबूतर पेड़ पर विश्राम कर रहा था. तभी एक शिकारी ने उसे देख लिया और वह झाड़ियों के पीछे छिपकर निशाना साधने लगा. At the same time, the ant spotted the hunter with his gun pointed towards the dove. He quickly crawled inside the hunter's boots and stung his ankle. Children, at the same time, the ant spotted the hunter. Spotted means saw, देखना. With his gun pointed towards the dove. चींटी ने देखा कि शिकारी ने अपनी बंदूक कबूतर की ओर तानी हुई थी. He quickly crawled inside the hunter's boots and stung his ankle. Stung means pricked, डंक मारना. चींटी ने क्या किया? वो जल्दी से भागकर शिकारी के बूट्स के अंदर गई
और उसने उसको वहां पे एंकल के ऊपर काट लिया, डंक मारा। The hunter lost his balance and missed the aim. The dove heard the noise and quickly flew away. From that day on, the ant and the dove became inseparable friends. Inseparable means always together, जो हमेशा साथ रहें। चींटी के डंक मारने से शिकारी अपना संतुलन खो बैठा और उसका निशाना चूक गया। He missed his aim. गोली की आवाज सुनकर कबूतर वहां से उड़ गया। He quickly flew away from that place. From that day on, the ant and the dove became inseparable friends. इस तरह से कबूतर की जान बच गई और उसी दिन से कबूतर और चींटी साथ साथ रहने लगे और पक्के दोस्त बन गए।